आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shivangi Mishra. Let's see what we have lined up for you this week. Pakistan People's Party criticizes authorities in GilgitBaltistan for corruption. POK residents suffer sky-high LPG prices, inflation engulfs poor. Workshop for encouraging theatre organized in Srinagar. JKCA organizes training camps for female cricket players. And now we will take you to witness how Indians celebrated Eid ul-Fitr, a major Islamic festival celebrated by Muslims across the globe with religious fervor. For years, Pakistan has been exploiting the people of illegally occupied Gilgit-Baltistan. Be it their resources, livelihoods or human rights, Pakistan never fails to ensure that the people of Gilgit-Baltistan do not receive any socio-economic upliftment and that their future remains in utter darkness. Despite making promises that make big headlines, the political leaders of Pakistan do not intend to provide any relief to the people. The state of Pakistan was recently criticized by a popular leader of the Pakistan People's Party. Take a look. The Islamic State of Pakistan has left the people of Gilgit-Baltistan in shambles. The people of Gilgit-Baltistan are considered second-class citizens in their own land, as they are stripped of their basic dignity humans deserve. Amid struggling and black marketing of food items by corrupt officials, the people of illegally occupied Gilgit-Baltistan are struggling with an acute wheat shortage, and the little that is available is being sold at high prices, making it almost impossible for poor people to buy. Recently, Bashir Ahmad Khan, the leader of the Pakistan People's Party, attended a conference where he blamed Pakistan's government for deliberately making their lives a living hell. इस वक्त सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वीट का। गंदम को माजी की तरह दियावर की आबादी के हिसाब से तकसीम किया जाए, कोई और ज्यादा मुतालबा हम नहीं कर रहे हैं। देखो, पॉपुलेशन है, 10 इजला हैं, 10 इजला में से 10 जिलों सबको मिलना चाहिए, पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए। पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को तकसीम होना चाहिए, चाहे वो गजर हैं, बल्तिस्तान के किसी भी जिले में है, गिलगित में है, दियामर में भी है। और दियामर में इस वक्त सबसे क्राइसिस है, बहुत ज्यादा। दिन को मुझे यकीन आप अल्लाह पे करें, हालांकि दियामर में अल्लाह ताला ने हमारे लोगों को जमीनों से भी नवाजा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी डेली 15 फोन मुझे मेरे हल्के के लोगों का जो है ना गंदम और आटे के लिए टेलीफोन आते हैं। ये कभी हमने नहीं सोचा था। तो क्यों सूबाई गवर्नमेंट इसमें क्राइसिस पैदा कर रही है? The people of illegally occupied Gilgit-Baltistan see no hope, as corruption is widespread in the region, and only the people with political connections get all favors. Even if there is a little budget for development, its management is deliberately done in a way that it never reaches the grassroots levels. The corrupt leaders siphon off all the funds, and authorities do not bat an eye. रियासत का पैसा है, रियासत का पैसा किसी को भी हम इस तरह जो है ना गलत तरीके से, बगैर प्रोसेस के, बगैर कानून कायदे के हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एहतजाज करेंगे। बेशक हुकूमत इनकी है, और जो बेड गवर्नेंस इस वक्त आप देख रहे हैं जीबी के अंदर, हमारा चीफ मिनिस्टर इस वक्त जमान पार्क की चौकीदारी कर रहा है, हमारा वजीर दाखिला खुद साख्ता बना हुआ है,
जमान पार की चौकीदारी के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, इतना बड़ा गदर नहीं होना चाहिए। वो 11 करोड़ रुपए किस पर्पज के लिए खर्च किया है? जमान पार्क के लिए, रैली के लिए, इनके वर्करों को बांटने के लिए, और फाइनेंस सेक्रेटरी को वो रातों रात अपना सीएम साहब ओएसडी बना देता है, जो कि आपके रूल ऑफ बिजनेस इजाजत ही नहीं दे रहा है। Islamabad's fake expression of solidarity never resonated with the people of illegally occupied Gilgit-Baltistan. Be it exploiting their resources or keeping them bereft of their rights, Pakistan has left no stone unturned in pushing their lives towards complete darkness. The region of Pakistan occupied Kashmir is grappling with inflation under exploitative policies. People are struggling with issues like unemployment and food insecurity. They are struggling to fulfill even their basic needs with the income they earn through their menial jobs. And amidst all this, an increase in the price of LPG is adding salt to their wounds. We have a report. Locals in Pakistan-occupied Kashmir have been suffering as they are deemed second-class citizens by Pakistan, and much discrimination has been inflicted upon them in line with the continual oppressive strategy to make natives' already miserable lives even worse. The Kashmiri people under illegal Pakistani control lead a life of discontentment and distress. They are constantly subjected to various forms of discrimination. But this year's inflation, they say, has breached all previous records of their sufferings. Their household budgets have been severely hit, with the number of people finding it nearly impossible to meet their fuel needs as LPG has become extremely expensive. आज हमने जब पता किया तो वो रेट दे रहे हैं इस टाइम 3100। तो ओगरा की जो अपनी रेट है वो पाकिस्तान में वो उस रेट पे अमल दरामद करने से कासर है। वो जो उन्होंने रेट देना चाहिए हमें वो 2400 है प्लांट का, ताकि वो हम ला के किराया वगैरह डाल के तो 2700 का यहाँ पे बेचें मुजफ्फराबाद के अंदर। लेकिन इस टाइम वो खुद प्लांट वाले 3100 रेट दे रहे हैं हमें, तो साथ कोई इनवाइस कोई चिट वगैरह कोई भी हमें दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं जिसको चाहिए वो ले लें, जिसको नहीं चाहिए तो वो जब रेट कम होगा तो हम फिर आप रब्ता करेंगे तो फिर हम आपको देंगे। The people of Pakistan-occupied Kashmir have for years been bearing the brunt of Pakistan's exploitative policies. They are made to pay extra charges for the fuel they buy, and this is when the energy needs of Pakistan are met at the cost of resources in Pakistan-occupied Kashmir. And now this price hike of LPG cylinders has come as an appalling blow that has just battered their lives. Due to this, transportation has come to a standstill as vehicles require LPG to work. The locals who could not afford expensive fuels like petrol and diesel were relying on less efficient liquefied petroleum gas for transportation until now. However, even that has become unaffordable with LPG prices soaring through the roof. रेट ही नहीं बराबर आते। यहाँ पे जो इंतजामिया रेट देती है उसके मुताबिक पीछे गैस नहीं मिलती है। गैस पहले से ज़्यादा पीछे ब्लैक करके उससे ज़्यादा रेट बढ़ जाता है। तो इस वजह से दुकानों वाले गैस मंगाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से ना तो ये हमारा ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं मुकम्मल 10 साल से, ना इनका कोई कारोबार है। और हर गाड़ी के साथ 4 मजदूर हैं, वो भी बेरोजगार हुए हैं। इस वजह से इंतजाम से हमारी ये गुजारिश है कि इसको ओगरा का रेट ख़त्म करके डीसी साहब के मतहत किया जाए। While Pakistan itself has been witnessing economic challenges owing to its incompetent policies, the POK region, which is already marginalized, has borne the major brunt of high inflation.
Next, we move on to Union Territory of Jammu and Kashmir, where theatrical activities have once again started picking up pace. After the abrogation of Article 370, Kashmiri youth is looking forward to availing new opportunities as theatre, an inherent part of Kashmiri culture, has finally managed to stand on its feet in the valley with the constant help of authorities and sincere efforts of artists. Recently, a workshop was organized in Srinagar to encourage theatre practices, especially among the young generation. Have a look. Art is a medium of communication, and it has been so since the dawn of human civilization. People, since time immemorial, have used art to contribute to the evolution of human thought and society. Such evolved human thought and creativity are intrinsic to the ancient culture of Kashmir, which boasts of a rich theatrical history and finds mention in a number of ancient literary texts like Kalhana's Ras Tarangini. Artists and authorities in Jammu and Kashmir are committed to the cultural continuity of theatre. Recently, a workshop was organized by Actors Creative Theatre, an organization that encourages arts among the younger generation. अक्सर ये बात मैं हर बार रिपीट करता हूँ, आई ऑलवेज मेंशन इट कि थिएटर हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए, हर स्कूल में कंपलसरी करना चाहिए, सो दैट कि इसके कई सारे फ़वाइद हैं. मैं खुद एक शाय बॉय रहा हूँ. मैं अपने स्कूल में हार्डली किसी से बात करता था. अगर बाई चांस टीचर ने कहा कि खड़े होकर कुछ बोलना है तो आई यूज्ड टू शिवर. थर से कसान. सो आई डिड लैक दैट कॉन्फिडेंस. सलाहियत है तो उस सलाहियत को और उभारने की ज़रूरत है, और थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मीडियम है जिससे उस पर काम किया जा सकता है. ये आपकी ज़बान पे, आपकी कॉन्फिडेंस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप करती है. वर्कशॉप्स, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है कि ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं. आई रिमेंबर कि 2003 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप किया था. रैना साहब, एम के रैना सर हमारे डायरेक्टर थे उसमें, और उससे पहले सिर्फ मैंने एक प्ले किया था दिल्ली में, जूलियस सीजर के आखिरी 7 दिन मिस्टर बापी दा के साथ. और आई वुड से कि लाइक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. The theatre workshop got a huge response from artists and youngsters in Kashmir who enthusiastically participated in the workshop. The theatre workshop got a huge response from the artists and youngsters in Kashmir who enthusiastically participated in the workshop activities in order to hone their theatre skills to perfection. During the workshop, participants interacted with the famed actor Mir Sarwar and other theatre experts who gave insights into performing theatre arts, including script writing, dialogue delivery, set designing, and costumes, among other many things. Undoubtedly, theatre is an inherent part of human nature that cannot be separated from the spirit of knowing and expressing emotions. It goes a long way in the personality development of individuals as well. मेरा जोड़ जो है पिछले कई सालों से कश्मीर के यूथ के साथ ही है. चाहे मैं फिल्म फेस्टिवल करता हूं, थिएटर फेस्टिवल करता हूं, वर्कशॉप्स करता हूं, क्योंकि यूथ को अगर मैं आज मान लीजिए जो आज 18, 20 या 25 साल का लड़का या लड़की है उसको मैं सिखाता हूं, तो वो अगले मान लीजिए मैं 20-25 साल की बुनियाद डाल रहा हूं. तो इसलिए यूथ को वो कहते हैं ना, कैच देम यंग. तो मैं भी, मेरी कोशिश जब भी मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं, मेरा जो कंसंट्रेशन या फोकस होता है यूथ पे ही होता है, क्योंकि यूथ को सिखाएंगे. ये एक कौम की मेमार है, कौम को बनाने में. अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो थिएटर से हो सकता है. थिएटर्स में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. आपको कैसे इंसान से आगे जाके कैसे बात करनी है, बड़े से कैसे बात करनी है, वो चीज आपको सीखने को मिलती है. ये बात जो है बुनियाद थिएटर है सबकी. फॉर एग्जाम्पल हमें इमोशंस यहाँ पे सीखे आए गए, 9 इमोशंस, जिसमें हमने लव सीखा, हमने बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, हैप्पीनेस वगैरह, बहुत सारे एक्सप्रेशन सीखे. तो इंसान कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत रिलेट करता है. जैसे कि समाज में जो चीजें हो रही होती है, थिएटर आपको दिखाता है कि आप उस चीज को पूरा परखे, आप उस चीज को पूरा उससे सीखे. Apart from being a medium to enrich values and personality,
theatre plays an active role in conveying messages of social concerns to the masses. Therefore, it is important that the audience as well as artists understand social responsibility and the influence that theatre can make among the masses. जो हम एक्ट करते हैं इससे मैसेज पहुंचती है लोगों की तरफ और उनका मतलब साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है उन पे और ये बहुत ही हम मतलब इजी नहीं है ये चीज़ें करना, हमें भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, काफ़ी सवेरे आना पड़ता है, काफ़ी लेट जाना पड़ता है आगे भी। और ये थिएटर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और मैं चाहूँगा जो आने वाले फ्यूचर में या स्कूल्स हैं वहाँ पे इनकी क्लासेस वगैरह होनी चाहिए ताकि इससे ये कई सारे फील्ड्स में हमें हेल्प करता है। मिसाल बिजनेस हो, वहाँ पे एक इम्प्रेशन देता है हमें, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। Through activities like these, authorities in Jammu and Kashmir are able to not only recognize but also provide a platform to young talent that sets them off in a direction of their dreams. Continuous efforts by several dedicated groups and cultural organizations are reviving theatre arts in the Union Territory. In recent years, India has seen the emergence of several female players who have just changed the face of the country's sports industry. And all this is a result of the opportunities and platforms that are being provided to them. In line with these efforts, several training camps are being conducted in Srinagar to encourage more female cricket players in the region and to enhance their abilities. Take a look. Gone are the days when cricket was popular as a gentleman's sport. In the current sports scenario, women are all determined to showcase their potential and ensure that opportunities are not limited to just men. Just like other sports, women are achieving remarkable feats in cricket as well. They are playing thrilling battles and above all, showcasing discipline at crucial junctures. To tap this potential of female cricketers across Jammu and Kashmir, a training camp is being conducted by the Jammu and Kashmir Cricket Association or JKCA. अब तो WPL भी आ गया तो जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है और अभी जो हमारा कैंप लगा है हमारा दिन योगा से शुरू होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या ग्राउंड ट्रेनिंग, फिर उसके बाद हमारा फील्डिंग बहुत इंटेंस फील्डिंग सेशन भी लगता है। तो आने वाले टाइम पे स्कोप है, तभी इतना कुछ अभी से ऑफ सीजन से शुरुआत हो चुकी है ट्रेनिंग की। अभी कश्मीर से एक लड़की खेली है, टीम में आई थी दिल्ली कैपिटल्स की। तो आगे स्कोप तो काफ़ी है, देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है, लड़कियां बहुत ही अच्छा खेल रही है डोमेस्टिक लेवल पे। तो उनके साथ अगर हम अभी से मेहनत करेंगे ऑफ सीजन से तो हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। Running into a total of 11 days, the training camp saw the participation of female cricket players from far-flung areas determined to hone their skills to perfection and make their mark in the sports industry. In order to keep players engaged in training efforts during the off-season, special focus is being given to players' physical and mental fitness by introducing yoga into the training program. Apart from training camps, the authorities are committed to providing players with a platform to showcase their athletic skills as they plan to organize talent hunt camps across the Union Territory. अब क्रिकेट में बहुत स्कोप है कि जो गर्ल्स खेल रही हैं वो अच्छा टैलेंट निकल रहा है हमारे जे&के की टीम से। मतलब हमारे मैचेस भी हो रहे हैं, हमारे इवन कैंप्स भी चल रहे हैं, इवन हमारा टैलेंट हंट भी हुआ था पीछे। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से गर्ल्स आई थी, अच्छी खासी गर्ल्स सेलेक्ट हुई, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे चूज़ हुए। देन उनमें से 19 खेली गर्ल्स, सीनियर्स खेली, 23 में गर्ल्स आई। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे टूर्नामेंट्स अगर हमें मिले या ऐसे कैंप्स हमारे लगे तो हमारी गर्ल्स भी आगे बहुत आगे स्कोप होगा कि हमारी गर्ल्स भी आगे बढ़ेंगी। देन मैं तो चाहती हूँ कि ये जो कैंप्स लगे हैं ये कंटिन्यू अगर हमारे लगें तो बहुत अच्छा हो। सर अगर सरकार क्रिकेट पे या
कोई भी गेम्स हो जैसे उन पे अगर लगा रहे हैं पैसे तो देन ऑफ कोर्स जो बच्चे हैं वो ऑलवेज अपने आप को स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करना चाहेंगे कि हाँ हम भी अगर खेलें तो देन हमें स्पोर्ट अगर कोई कर रहा है कोई भी स्टेट का बच्चा हो देन उन्हें अगर स्पोर्ट मिल रहा है तो वो ऑफ कोर्स वो एक गेम चूज करेगा कि हम इस गेम में जाएं तो देन हमें अपना देश का नाम रोशन करने को मौका मिलेगा. Fighting against all odds, women in Jammu and Kashmir are not just entering into the sports arena, but are also grabbing headlines with brilliant performances. Some of them have already accomplished a feat in various sports. One among them is Jasia Akhtar, who became the first cricketer from Jammu and Kashmir to secure a women's IPL contract. Another inspiring sports star is Sarla Devi, who is well known for her ambidextrous skills on the play field. She has bagged various awards at national tournaments. If these women, in absence of opportunities, made their mark, then at present, when authorities in Jammu and Kashmir are providing full support in terms of infrastructure and platform, they will surely come off with flying colours. हमारी टीम्स के प्लेयर्स होते थे वो आते थे, टूर्नामेंट खेलते थे, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद घर चले जाते थे, अगले साल फिर एक साल के बाद वो टूर्नामेंट के लिए बुलाए जाते थे. इससे क्या होता था कि एक साल तक बीच में जो गैप है उस गैप के दौरान वो क्या कर रहे हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस के लेवल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या उनकी स्किल एनहांसमेंट हो रही या नहीं, इसके ऊपर कुछ भी ध्यान एसोसिएशन का नहीं था. तो ये हमने इस बार से एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है. हम ऑफ सीजन कैंप्स इनके लिए लगा रहे हैं. बेसिक पर्पस इन कैंप्स का ये है कि ऑफ सीजन के दौरान भी इनको हम एंगेज करके रखें, इनको फिजिकल फिटनेस का पूरा इनका ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ इनका स्किल एनहांसमेंट जो है वो भी किया जाए. अभी जो कैंप चल रहा है ये 11 दिन का कैंप है. अभी पहले इनका पूरा जोर जो है फिजिकल फिटनेस के लिए दिया जा रहा है. पहली बारी हमने योगा इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि हम मानते हैं कि जब तक प्लेयर मेंटली टफ नहीं होगा वो खेल नहीं सकता है. इसलिए प्लेयर्स की फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल टफनिंग के लिए योगा का इंट्रोड्यूस किया है. यहाँ पर भी श्रीनगर में दोनों कैंप्स में योगा की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं. और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस के बाद इनका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि कोचेज लेंगे, और स्किल टेस्ट लेने के बाद इनको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ जो है आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि वो नेक्स्ट कैंप में आने के पहले अपनी जो गलतियां हैं उनको दूर कर सकें. Authorities have already been taking a number of initiatives to bring female talent to the fore. And if it continues, Jammu and Kashmir will soon be a hub of phenomenal women athletes. And now in our special section of Incredible India, we will take you to witness the celebrations of Eid ul-Fitr. Celebrated by Muslims with great religious fervor across the globe, the festival marks the end of the holy month of Ramadan. Also known as Meaty Eid, the festival is observed on the first day of the Islamic month of Sawal, the next month after Ramadan. Let's have a look at how the festival was celebrated recently across India. Festivals in India are all about merrymaking, traditions, feasting and celebrating the very essence of life itself. The Islamic festival of Eid ul-Fitr is all about forgetting the past and staying grounded and humble with everyone. The festival literally translates to Feast of Breaking the Fast and is celebrated at the end of the fasting month of Ramadan, the 9th month of Islamic lunar calendar. This year, after the long pandemic break, the festival was celebrated with great zeal and religious fervor all around the country. आज दिन ईद का है, बड़ी खुशी का दिन है. बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जमा मस्जिद ईदगाह पे नमाज हमने अदा की. हिंदुस्तान के अंदर हर जगह ईद की नमाज हो रही है, बड़ी प्यार मोहब्बत से हो रही है. Muslims across the country gathered in mosques for prayers to offer the last namaz of the holy month of Ramadan. In New Delhi's iconic Jama Mosque, scores of devotees started gathering from the morning to offer namaz.
People embraced each other and exchanged Eid greetings after the prayers. With emphasis being on food, people enjoy a spread that consists of sweets, fruits, sharbat and other eatables as a mark of the celebration. We are celebrating the Eid in the Eidgah, which is considered to be a very precious moment for all the Muslims all around the world. And post the Eid namaz, our Imam gives out the speech of harmony and peace among all the Indians as well as people around the globe. In Surat city of Gujarat, priest or Imam gave out loud the speech of harmony and peace among all Indians and people across the globe. The southern state of Kerala celebrates Eid ul-Fitr a day before the rest of the country. Due to the moon sighting adheres to the traditional Islamic calendar, an actual sighting of the moon. Across the globe, the festival is observed as a time of joy and celebration, with Muslims gathering with family and friends to exchange gifts, share food and pray together. It's one of the happiest occasions for all the believers. 30 days of sacrifice of Eid, fasting, prayers, and also zakat and sadaqah, and a lot of good deeds which has been there in the last 30 days. And after that, we are celebrating the Eid. This is a day of harmony, and this is a day for happiness. Eid ul-Fitr was said to be originated by the Prophet Muhammad. According to traditions, when the Prophet arrived in Medina after migrating from Makkah, he noted that locals celebrating two specific days, Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha. Since the festival doesn't begin until crescent moon is sighted, Eid ul-Fitr starts and is celebrated on different days in different regions. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.